Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vaashishtha evening session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के यह इवनिंग सत्र में सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 40वें सेशन में पहुंच गए हैं। टुडे वी आर ऑन 48th सेशन. So this beautiful journey has been continuing, will continue this journey today also. Today we are celebrating Teachers Day, 5th of September. So with the fullness of gratitude in our heart to all the teachers, जो भी टीचर्स अपनी जिंदगी में आए हैं, अपने माता पिता के रूप में, अपने भाई बहन के रूप में, अपने शिक्षकों के रूप में, अपने जो लगते हैं कि अपने एनिमी तो ऐसे कोई होता नहीं है, जो लगते हैं कि जो सो कॉल्ड नेगेटिव टेंडेंसीज हमें दिखते हैं, वह भी हमें यह सिखाती है कि हमें इनके जैसा नहीं होना है. तो उनके प्रति भी, सभी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए सभी को शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. So let us begin with our session by chanting Om 3 times and then we continue the session. Today we will also be hearing Gurudev that according to him who is the teacher. Teacher अपना एक शिक्षक कैसा होना चाहिए. उसके बाद में we will also get to listen to Kusum Tai, who is the author of this book. जिन्होंने यह सुबोध योग वाशिष्ठ का किताब लिखा है, जो हम लोग एज ए रेफरेंस है. उनका भी मैसेज अपने पास है. हम लोग उनको भी इस शिक्षक दिन के सत्र में सुनेंगे. एंड देन विल कंटिन्यू टू लिसन टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि आपके जीवन में योग वशिष्ठ आया और आपके जीवन में योग वशिष्ठ ने क्या परिवर्तन लाया. तो यह भी हम लोग आज देखेंगे, सुनेंगे. विल एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड एंड विल आल्सो लिसन टू एक्सपीरियंसेस ऑफ all of you, what difference it has made in your life. So with that note, let us all close our eyes. अपनी आंखें बंद कर ले. Sit comfortably, आराम से बैठ जाएं. रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स. अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे. गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है, सुखद अथवा दुखद. Let us take a deep breath in. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए. यह वर्तमान क्षण नया है. इस वर्तमान क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं. ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले
Let us awaken the divinity within. अंदर के गुरु को आवाहन कर ले. आवाहनम 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 पुनः पुनः let us express our gratitude towards the divine, towards Guru. गुरु वंदना कर लेते हैं. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. Let us pray to the divinity. गुरु से प्रार्थना कर ले. अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है अहम का भाव, वह भी गुरु की प्रेरणा से भी प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें. मुक्ति की राह पे चलने वाले हम लोग, मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, इसी क्षण गुरु कृपा से मुक्त हो जाए तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे सेवा के लिए आना पड़े तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें. अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव. So once again अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस टीचर्स डे स्पेशल सत्र में स्वागत है. वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे. आप सभी को शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. गुरु का नाम आए, शिक्षक का नाम आए और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को याद ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. So by expressing our gratitude towards Gurudev, that Gurudev, thank you so much for being in our life, for taking us along, no, in every situation in our life, just making us walk through like a clouds in every situation, no, making us be in that state where we can smile through, no, the ups and down is the part of living, but smiling through, sailing through it is the art of living. Thanks for bringing that art of living in our life. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the one who has attributed his birth towards all the teachers of the world,
expressing our gratitude to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को भी जगत गुरु हमने कहा है. Expressing all our gratitude, all the divinity, all the Jagat Gurus, all that Guru Tattva, Guru principle towards our Mata Pita, towards our teachers, towards our friends, no? Everyone who has been there in our life as a teacher, being a teacher to us, where we have learned something, expressing our gratitude towards them. Let's begin with the today's session. अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे. हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुरुदेव टीचर्स डे के लिए टीचर्स के बारे में क्या कहते हैं. So I'll share my screen now and share that video with all of you. Just stay back. A good teacher, first of all, had to have patience. Very important. The student may be bad learner, but teacher's patience can turn the situation around. So first is lot of patience in teacher. That's one. Second quality of a teacher is they should understand the student from where they come from and how to guide them step by step. This is very important. Lord Krishna was such a good teacher. So that he guided Arjuna step by step by step. Arjuna himself says at some point of time, "Oh, I am so confused. Krishna, tell me one right thing. One thing which is right. You tell me this, you tell me that, I am so confused." So whenever a student is growing, he goes through a lot of confusion. That means his concepts are breaking down. A good teacher understands this. He doesn't allow a student to hold on to one concept. Because one concept is like one step. But then that has to break down to rise to the next step. A teacher has to guide a student through that, through confusion. Create confusion also when it is needed. And the third quality of a teacher that's very important here is be loving and at the same time be very strict. Both. You find teachers who are very loving and then you find teachers who are very strict. Both of them are not good teachers.
So you need to have both these qualities. I remember, in the school we had a teacher who was a history teacher. She was very sweet to everybody. Everybody loved to be in her class. But people got very less marks in her class. But the physics teacher was very stiff, very tough. People were scared of him, but everybody scored high marks in that class. So you need to be tough and sweet, both. Otherwise, you won't be able to guide the student where you want them to take. It's a very beautiful yet very strange idea in India about teacher-student relationship. Guru-Shishya Sambandha. The Guru says, my disciple should win over me. And the disciple always wishes, Jai Gurudev, let Master win. Let Guru win is the desire of a student. And the desire of a teacher is, let my devotee win, disciple win. Both wish victory for each other. This is the most healthiest situation. If a student argues with the teacher and feels he has won over, he knows more than the teacher, then that is arrogance has taken him way down. Because a student feels he knows more than the teacher, that means he has not really learned. That arrogance kills him, kills his wisdom. He has no wisdom then. And the teacher always wants the student should excel. I have reached a height, and my student should reach even higher if it is possible. That is the wish of a teacher. So, teacher wishes victory for the student, and student says, my teacher always wins, because he knows my small mind, my small things, if it wins, I'll be miserable. But when the teacher wins, it's always joy and happiness for me. This is what the student thinks. If you like this video, don't forget. So we were listening to Gurudev Shri Ravi Shankar ji, and that is the reason we say Jai Gurudev. What does Jai Gurudev means? Let the Guru principle, let that tattva in you have the victory. No? उस गुरु तत्व की जय हो, उस तत्व उनकी विजय हो, इसलिए बोलते हैं जय गुरुदेव. So that was Gurudev, who is our also Jagat Guru, Sadguru for us. And we have been listening to him on this occasion of Teacher Special Day. What should be the qualities, how the teacher should be, no? So those who are all teacher or top-leading teachers, this was a very, very good insights. And even for those who will be teacher in near future, very soon, even for them, this message was really, really important. Now, when we are sitting here in Yog Vaashishtha session, and we are referring to any particular book, so how can we forget about this particular book? No? So good Yog Vaashishtha, written by Suman Mahadev Karji. Her zeal and her interest in this subject has not died out, even despite of getting old and older. So one fine day, myself, Sangeeta ji, Sachin ji, and Yatin happened to visit at her place, and we took an opportunity to record her message for all of us. So on this Teacher's Day, by remembering her,
By expressing our gratitude to Kusumtai, we will listen to Kusumtai what she has to say about Yog Vaashishtha. So let's hear her now. का इस जय गुरुदेव, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का इस छोटे से सत्र में स्मॉल जो अपना सेशन है उसमें आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज के अपने चीफ गेस्ट है सुमनताई महादेवकर जी। Just to introduce her, she is the author of this book, Yog Vaashishtha Yog Vaashishtha Subodh Yog Vaashishtha Sri Vaashishtha Ram Samvat, and it's been written by Suman Mahadevkar ji. So this is our golden opportunity to be in vicinity with her, and on this occasion it is our request to Sumantai to give some message to all our audience who are very much interested in reading and understanding Yoga Vaashishtha. Over to you, Sumantai. Kindly give your message. These days I am thinking of the way that this today's life has become, and what was before, and what our ancestors have made it very rich heritage or legacy for us in Vedanta or philosophy, Indian philosophy जिसको बोलते हैं. And Yoga Vaashishtha is one of the wonderful writing or a book that gives you many ways, upayanam, as Lokmanya Tilak has defined our religion, that here there are many ways, and it adds to the riches of our religion. And I was thinking these days that you have to be vigilant about your efforts on every level and in every field, how it will be possible. And on that thought, I came to understand that our ancestors or our people have thought it completely, fully, and have suggested many ways that are useful for the this adhyatma or moksha, what is the main thing of Indian life. And those are, I think these days I am thinking of religion and dharma, what is said. And dharma has three sides. एक philosophy, उसका सृष्टि विज्ञान बोलते हैं. विज्ञान and philosophy most go together. And philosophy is the Vijnan also, or philosophy is the thing from which Vijnan comes. Then the second thing I told you that day, that Upasana, that way of worship. And the third is the Niti, Sadachar, or Yama Niyama, Niti Shastra. These are the three facets of our religion that comprises the Vedanta also. That is, the moksha is there, 4 purusharthas are there. And the one in European philosopher says there is no the most udar or great thing than this system of purushartha. That is, purushartha is dharma, artha, kama and moksha.
both sides, dharma and moksha, beginning. You should behave according to the dharma. And what is dharma? You should behave according to your worshipping system, जो कुछ होगा, एक संप्रदाय होता है, वो होता है, तो उपासना. और you should be नीति यानी ethics, the ethical laws that have suggested in our do's and don'ts, that you should observe as much as possible. And in Yoga Shastra, they are said as yama and niyamas, that way. And every script or text has given all these in everywhere. And the third is philosophy, Niti Shastra, and Upasana. That is way of your worship. That you have a particular grantha, a book, maybe Jnaneshwari, as Varkari do it with Jnaneshwari, Gatha, etc. And what your Kula Parampara, your family traditions, those also to be observed. And that keeps you on the way, the channelizing of your personality. Otherwise, these days, it is very difficult. The Kali Yuga is there, and our texts have, every text, Purana, there is Kali Yuga Varnan. And everything that is Anukula, it is according to Kali Yuga, is happening these days. How to keep ourselves being in that and even out of that. How to be safe from these things, that TV, etc., that you all know. So we have to keep ourselves, I don't say completely away, but I say you should be safe from these. And these three ways. And also there are small things also, as they have said that in yoga and everything, yama, niyama, asana, pranayam. These days asana, pranayams are more in practice, and yama, niyamas I don't know how they behave. And the another thing is the knowledge, jnana, tattva jnana, that tattva jnana. So the Yoga Vaashishtha helps you to make it possible to understand. Because what is the use of knowledge? You do understand and you can do viveka. Viveka is the most important thing. You should, moment to moment, you should be able to understand what is to be done and what not to do. And unless you channelize yourself this way, you will be lost, I should say. And that way, I think our those thoughts of religious life, of what I am now telling, not only Shiva Shivin, also Jati Bhed, etc. We have very bad things, but why we should leave away our good things? The sarthak bolte hain. What is the purpose of life? That our philosophy has done very carefully and very correctly. And there is no religion or philosophy like our Indian philosophy to follow. So I request you all to think this way. And even these days I am thinking, as I said, that on every step, on every moment, we have to keep vigilant. And for that, many ways have suggested by our religion, that yoga, then there is mudra jnana,
even you need to understand your physique and how it is connected to mind and how it, that is in Yoga Vaashishtha. मन आणि शरीर यांचं नातं काय? What mind is, how mind is related to body and how body reacts mind and how mind reacts body. Then again mind and buddhi, buddhi and atma, atma and man. So this way many very correctly and aptly and very ably our Rishi Munis have done all this. They have brought all this together in one life for a human being. So we should take that advantage of those, that knowledge that I request you all. Yes. Namaste. Bye. Jagadev, so we were listening to Sumantai, our mentor, the author of the book. So really expressing our gratitude towards her for writing such a nice book, making it so simple for us to go through it and understand. So that was the message that we got from Sumantai, multiple things that she has told. So now let's continue with our session. We are now going through Utpatti Prakaran and we are looking into Karkakati Rakshasi's story number 1, 2, 3. There are multiple stories. And through this story also we get to learn that how this vichara, the moksha ke char dwarpal, that the shamadam, and then it has been said the thought process, the vichara itself can lead someone into the Atma Jnana. So that is where we see that we have seen such examples in the past also, that the Dronacharya and Ekalavya and Karkati Rakshasi, just on her own, she is able to achieve the Atmagyan just by thinking, just by doing the tapa on her own. So that is also is one of the theme line that apart from the other physical bodies around, the Guru principle is not just the physical bodies that we refer to. It is also been known as the Guru principle. Now the Guru Tattva, which is there whenever we do any activity, our Antaratma, that Guru principle sitting inside always guides what is good, what is bad. So if we can be associated with that knowledge can also be a guiding principle to us. नॉलेज भी अपना गुरु ही होता है, तो उसी नॉलेज को भी अपने पास पकड़ के रखना चाहिए. कहाँ से ज्ञान मिलता है? तो फिर सदगुरु से मिलता है, गुरु से मिलता है, टीचर से मिलता है, अपने आजू बाजू के लोगों से मिलता है, माता पिता से मिलता है, सभी से. यदि आपकी आंख खुली है तो जीवन का हर एक वह व्यक्ति जो आपके आजू बाजू होगा या यह सृष्टि जो आपके आजू बाजू में होगी वह हमें ज्ञान ही प्रदान करती रहती है. बस हमें वो देखने की अपने चक्षु, ज्ञान चक्षु अपने होने चाहिए. इस नोट के साथ इस सत्र को मैं आपके हवाले कर देता हूं. आपके जीवन में योग वाशिष्ठ के वजह से क्या बदलाव आया, यह आप आज इस टीचर्स डे के अवसर पर अपने पुस्तक को, अपने ग्रंथ को, योग वाशिष्ठ के बुक को ही अपना गुरु के रूप में मानते हुए यह गुरु ने, यह ज्ञान ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया, इसको व्यक्त करने का आज का अपना यह दिन है. तो ओवर टू यू ऑल. यू कैन unmute yourself one by one and you will be able to express your gratitude towards this book, towards this knowledge. Over to you. The unmute option is kept open. You can begin. We can begin with Sangeeta ji. Sangeeta ji, are you ready?
Yeah, so we have Sangeeta ji with us. We have Sachin ji also with us. So let's begin with Sangeeta ji. Sangeeta ji, yeah, share your experience. What is happened? How did this Yog Vaashishtha came in your life, and how you could? What is it that you got it from it? You can express yourself. Yeah. So it's like first when we went, we had been, we had met Sumantai also, that time also I was not in Yog Vaashishtha actually. After that, I came into Yog Vaashishtha, So listening to her also, it was great, when now just the whole video which we saw here, we had it personally there. It was very nice. She blessed me also. So that was also very good. And suddenly I started relating to Yog Vaashishtha, So it was like Someshwar used to always tell me, why don't you come in the morning, listen that. So I used to say, I don't need other Yog Vaashishtha and all, it's okay with me. But the minute I started attending the class, I don't know how, and I could feel, that all those answers which I was looking for, like it is a story of Rama being in depression. He doesn't like anything, then he keeps on asking questions. If there is nothing there, means like all those things. When I heard all that in the Yog Vaashishtha, it was just as though I was relating to myself. So just as Rama was in the self-inquiry, so that was a very beautiful point which touched me. Exactly being in that self-inquiry, asking yourself, who am I? Keep on asking yourself, am I this? First your answer will come, yeah, I'm Sangeeta. Then I'm a wife of so-and-so. Then I'm a daughter of so-and-so. I'm mother of so-and-so. Keep on asking. So, it is like you keep on opening that onion and you go on opening it. What remains inside? That is your answer. So coming up to that point, of course, it takes time. But then let us be in that inquiry. So even Rama was in that inquiry. Then the second wonderful, beautiful thing what I like in Yog Vaashishtha is we have our mind, right? Full of what? Full of thoughts, full of concepts, full of ideas. So everything is there. And what happens when you look into that, conceptions and thoughts and all, these are all borrowed. Nothing is yours. How we do it? From the very beginning, from the childhood, we go on accumulating all those and we feed it in that. And what happens is we play that in our life and we go round and round in that way. Now just as Gurudev said right now, what happens? A good teacher breaks your concepts. Every step. That is when you break your concept, you move to the next step. Exactly that what happens in Yog Vaashishtha. Don't you get that? I too have, actually I have really experienced that, it just breaks your concepts. And what happens? Then only you go ahead, the next step. Just, I have read one, it's striking me, I don't know it's relevant or not. The seed. Any seed you take, it is soaked. Okay, it goes into the earth. Now, what is the journey of that seed to become a tree? Just to break open that. And it takes that time to break open. And one small, what you call it, as a small, tiny little plant just comes up. And that is the journey. Just to break open that. And then it becomes a tree. So that is exactly what Yog Vaashishtha does, It breaks open that. And then that tree, that small sapling is seen in that. And that is so beautiful. Then when you see that nature giving you that, helping you with all the fertilizer, mud, water, sunshine, this, that, everything, all the suitable things are there. Then only that sapling comes out. Isn't it? If one thing is missing, it doesn't come. So if we are over here, I think so, it is like we have all the favorable other things
granted to us by the universe that we have to be in gratitude for, to help us to have that sapling from within us. And that is the journey of that seed. Then it becomes a tree. It's no worries about it, isn't it? So that is one of the beautiful things what I really feel on my personal level. It's nothing to. And then other things are, it's another thing what I feel is, again, it's with me. Have you seen, who was that? I had it in my mind, but I just forgot. Please, the one, okay, I'm not getting that name of that. Okay, we can move to the next point then. If I get it, I'll tell you. Yeah, so even this is another thing. And then one more beautiful point what I liked is, so it leads you to, there are three things: the seen, what we see, right, and the seer, and then what is the, actually it's taking me to the no mind, actually, I tell you. So all these, you go beyond all that. Yeah, have you seen Anarkali picture? How is Anarkali? Yeah, so it is just like that. We build ourselves around us, all these things like an Anarkali, and then we are in that. That is how we live. That is, my teacher used to always tell me. I don't know. She used to always tell me that you are like an Anarkali. So that breaking open that the whole of the thing is what Yog Vaashishtha is. Of course, we have to still go ahead and read everything much more. We will come up to that. Yeah. So taking us all above all these thoughts and minds and subjects, and coming to the subject. From the objects, we come back to the subject. Everything is that one. So let us be in that, and I won't take much of the time because all of us have to share that. If I keep on staying here, maybe it becomes too much. Oh, Yatin ji, happy Teachers' Day to you. From morning I've been, yeah. So thank you so much. Lovely to see you, and happy Teachers' Day to all of you, with the blessing of our Gurudev in our life. I would really like to end. And still there is a journey still to go on, but it is a very beautiful one. So we keep on experiencing, and we get the blessings of Yatin ji in the morning and evening ji Someshwar. So it is all working very well with me. Yeah. So I would like to end over here, because if we keep on talking, so it just goes on. But then let us, all of us, have the chance to talk. Okay. So over to you, Someshwar ji. Thank you very much for giving me the chance to talk first. Thank you. Thank you so much, Sangeeta ji. Thank you for expressing that how the Yog Vaashishtha came in our life, what changes Yog Vaashishtha has brought in our life, how it has changed our life. No? That is what the theme today, and expressing gratitude towards this knowledge. What changes? So thanks for beautifully summarizing that. Jai Gurudev. We also have Sachin ji with us. Sachin ji and Yatin is also there with us. At least if I want to share my experience, it was Yatin who introduced me to this Yog Vaashishtha. It just happened one day that we wanted to start with something. Ashtavakra was finished, and then we just wanted to start with something new. I announced the Yoga Vaashishtha session. I did not really knew what it is going to be. All that we had in mind, that okay, there are some Rishiji's video, we'll play those video, learn something from it. And I called Yatin in the night. So when you have to come, and we are going to start with you. So that is how the Yoga Vaashishtha came in my life. Yatin being my mentor in this journey. So wish you very, very happy Teachers' Day, Yatin. Thank you so much for being in our life and bringing Yoga Vaashishtha in love. Yeah.
Jai Gurudev. So let's begin with Sangeeta ji has already initiated. Let's hear out what Sachin ji has to say about it. Sachin ji, you can kindly express how did Yoga Vaashishtha came in your life, how your life was before Yoga Vaashishtha, and how it made that turnaround, no? That point, that turnaround point, how the Yoga Vaashishtha have brought changes in your life. Over to you, Sachin ji. Jai Gurudev. थैंक्स सोमेश्वर जी, थैंक्स गीता जी, थैंक्स सचिन जी। मैं हिंदी में थोड़ा एक्सप्रेस करता हूँ तो ताकि सबको ये चले। पहले मैं जस्ट एक श्लोक बोलता हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इतना गुरु का महत्व है। तो ये एक्चुअली योग वशिष्ठ पढ़ने से मतलब पहले ऐसा मतलब हर एक इन जनरल ऐसा माना जाता है कि योग वशिष्ठ एक थोड़ा क्लिष्ट या कॉम्प्लेक्स ऐसा ग्रंथ है जो समझने के लिए बहुत मुश्किल है वगैरह ऐसा। तो इसलिए जनरली नॉर्मल पब्लिक वो ग्रंथ के ऊपर जल्दी पढ़ने के लिए जाती नहीं, और खुद पढ़ना तो मतलब वो थोड़ा बोरिंग लगता है वगैरह, और काफी सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था, मैंने एक दो कहानियां पढ़ी थी, लेकिन वही गुरु योग वशिष्ठ मतलब थोड़ा क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसा ही जनरल एक परसेप्शन माइंड में हुआ था। और मतलब ऐसा अलग क्या हो सकता है उसमें, मतलब बाकी इसमें जो है वही ज्ञान उसमें रहेगा, ऐसा एक धारणा थी। लेकिन जब यतीन जी ने वो लिंक मुझे भेजा योग वशिष्ठ का, वैसे उससे पहले मैंने उनके एक दो वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे। तो मुझे एक जैसे ऐसा ग्लिम्स पता चला कि ये कितना डेप्थ में हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, एक ऐसा ही मतलब अटेंड करके क्या है। और वैसे ही कोरोना का पीरियड था, टाइम तो बहुत था, तो लेट्स यूटिलाइज इट, ऐसा भी एक था। तो मैंने वही वो चालू किया पढ़ना, और जैसे जैसे उसके एक पाथ ब्रेकिंग कंसेप्ट्स आने लगे और जो एक एक प्रिंसिपल्स आने लगे, और वो जैसे होता है ना, खुल जा सिम सिम, एक छोटा बच्चा अगर कोई एक गुफा में गया, वहां पे उसने इतने सारे अलग अलग ये देखे, वैसा एक माइंड का ये हो गया, अरे बाप रे, इतना सारा ज्ञान है, इतना ये है, और इतने लेवल्स पे वो लेके गए हैं उसको कि ये एक एक्चुअली मैं वही बोल रहा था कि ये यूजर मैनुअल है, ये बहुत पहले लोगों के हाथ में आना चाहिए। क्योंकि ये राम जी को ये उनके लाइफ स्टार्ट करने से पहले मिला था। यही अगर हम अपने एजुकेशन में 10th या 12th में एक क्वालिफिकेशन ही रखे कि ये योग वशिष्ठ पढ़ो तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने करना चाहिए, क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हर एक के लाइफ में। और जैसे जैसे ये पढ़ते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे वो मतलब इसमें योग वशिष्ठ में कहा है कि ये ग्रंथ मतलब अज्ञानी आदमी को भी ज्ञानी बना देगा अगर वो बार बार पढ़ेगा। तो इसके ऐसे वो संस्कार उसके होते हैं, और इतने छोटे छोटे एक स्टोरीज से, और इतना मतलब अलंकार वगैरह उसमें बाकी भी बहुत है, साइंस भी बहुत है। और ये एक पूरा मतलब इन एंड आउट उन्होंने बताया वशिष्ठ जी ने कि क्या लाइफ होती है, कैसे माइंड वर्क होता है, कैसे विचार अपने आप पे इफेक्ट करते हैं, और एक पूरा मार्ग दिखा दिया है। तो मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गिविंग दिस नॉलेज एंड ओपनिंग दिस एवेन्यू बाय यतीन जी। और यतीन जी का एक ये है कि इतने दिनों में उन्होंने मतलब कभी एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, और वो टाइम पे आके वो उनका जो ये था कि लोगों ने भी उतनी सिंसियरिटी से सुने वो, कि जो उन्होंने उनको माइंड को जो स्पर्श हुआ है वो योग वशिष्ठ का, वैसे ही लोगों को भी जीवन में परिवर्तन लेके आए। तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऐसा मुझे लगा। और इससे भी ज्यादा मुझे ऐसा इसका फायदा लगा कि आप जैसे सभी लोगों का सत्संग मुझे मिला। मतलब ये संग अगर क्योंकि ज्ञान में रह के वो पढ़ के सुनना वो ठीक है, लेकिन वही समविचारी लोग मिलना
और वही लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना, इसके जैसा आनंद नहीं है। क्योंकि इतने वर्ल्ड में ऐसे समविचारी ऐसे बोलते हैं कि सज्जन लोग बहुत कम या ग्रुप में जमा होते हैं, एकत्र आते हैं। लेकिन ये एक मतलब दुग्ध शर्करा योग जैसा है कि हम सभी अच्छे इसमें, और ये सभी एक साथ आ गए। तो ये सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज लग रहा है इसमें, और यही कंटिन्यू रहे, ऐसा मेरी प्रार्थना है। Thank you so much for sharing your experience of being Yog Vaashishtha in life. So, जिन्होंने ये कहानी शुरू की, उनका अनुभव क्या था, उनके जीवन में योग वाशिष्ठ कैसे आया, तो उनको थोड़ा सुन लेते हैं, एंड देन विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल आवर ऑडियंस कि उनके जीवन में योग वाशिष्ठ कैसा आया, उनके जीवन में योग वाशिष्ठ ने क्या बदलाव आया। ओवर टू यू यतीन। जय गुरुदेव। ये करीब 2008 की बात है। मैं जिस कंपनी में जॉब में था, तो मेरे परम मित्र संदेश सावंत, वो भी मेरे साथ थे, और हम हमारे ऑफिस के टेरेस पे यूजुअली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी बातें करते थे, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, लाइफ के बारे में। तो ऐसे ही बातें करते करते कुछ तो संदेश ने बताया कि ये योग वशिष्ठ पढ़ा है क्या, क्योंकि हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की सत्संग तो मेरा हमेशा ही चलता था। सो ऐसे लोग मिले थे, तो वहां पे सुबह सुबह सत्संग ही होता था उसके साथ। तो उसने पूछा कि भाई ये पढ़ा है क्या, तो मैंने बोला नहीं, कभी सुना भी नहीं इसके बारे में। तो कहा कि ये बुक पढ़ो, मैं लेके आता हूँ कल आपके लिए, और यह पढ़ने से ऐसा कहते हैं कि मोक्ष मिल जाता है, इसका इतना ये है, गुरुदेव ने कहा है पढ़ने के लिए। तो मुझे लगा चलो मोक्ष की बात की है तो पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद वो किताब ले ली, और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो हमेशा मैं ऑफिस को जब कैब से जाता था कोथरूड से हिंजेवड़ी, तो करीब करीब 20 किलोमीटर था। तो इस 20 किलोमीटर में वो इनोवा कैब आराम से बैठे हैं, उसका एसी चल रहा है, और फिर ये योग वासिष्ठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 5-10 मिनट में ही नींद आ जाती थी। एक पन्ना पूरा पढ़ना भी उस समय में नहीं होता था, लेकिन पढ़ता गया, क्योंकि कैब है तो फिर उसके हिसाब से चलो शुरू तो कर देते हैं पढ़ना, ऐसा होता था। शुरू के कुछ मिनट पे पढ़ लेते थे, और बाद में वो एसी वगैरह के कारण नींद आ जाती थी। तो उसके द्वारा वो पढ़ते पढ़ते गया। वीकेंड को ब्रेक्स आते थे, कभी छुट्टी हो गई तो ब्रेक्स आते थे। तो जैसे सबकी कहानी है वैसे ही वो होता रहा। पर धीरे 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 वो एक साल में, एक साल से ज्यादा ही लिया उसने कंप्लीट करते करते। और फिर पहला राउंड खत्म होने के बाद लगा कि चलो अच्छा है, तो क्यों ना इसी को पढ़ता रहे, अब क्या करे, और कुछ करे तो इसके बदले इसी को फिर से पढ़े, जरा समझे। ऐसा करते करते वो 3-4 बार ऐसे काफी समय तक वो पढ़ना हो गया। तो करीब मैं कहूँगा 8-9 साल तक तो वही चलता रहा, पढ़ता रहा। और उसके बाद फिर उससे कुछ समाधान भी मिलने लगा कि ये पढ़ते पढ़ते ऐसी ट्रिक समझ में आने लगी कि चलो कोई बात पकड़ी है तो इसी समय का उपयोग अच्छे से किया जाए, और कुछ हमने जो जीवन में नहीं सीखा था उसको भी इस कैब के समय में, हमारी जो ऑफिस की गाड़ी थी उसमें, उसका उपयोग करके नई नई बातें सीखी जा सकती है। तो योग वशिष्ठ से पहला मंत्र वो मिला कि समय का यूटिलाइजेशन करो। समय मिला है ना, तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल करते रहो, ऐसे खाली बैठे नहीं रहना। नींद आ रही तो सो जाना, लेकिन नहीं है तब तक तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उसका वो पहला मंत्र मिला कि काफी कुछ किया जा सकता है। धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर कभी तो वो जो स्वामी वेंकटेशानंद की किताब है, उसके आखिरी के कुछ पन्नों में उन्होंने उसका कुछ उपयोग बताया था कि इसमें ऐसा है वैसा है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये पूरा योग वशिष्ठ नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा योग वशिष्ठ कुछ होना चाहिए। तो मार्केट में गया, वहां से खरीद के लाया। तो वहां की जो मराठी किताब खरीदी थी वो काफी बड़ी, ऐसी 2 बड़े बड़े बुक्स थे, और करीब 1800 पेजेस थे उसके, बड़े वॉल्यूम्स। तो वो पढ़े, और फिर उसको भी पढ़ने में 2-2.5 साल लग गए। तो वो जब कंप्लीट किया तब मुझे समझ में आ गया कि अरे योग वशिष्ठ इतना सुंदर है, और इतना बड़ा है, और इतना अच्छा है, इसके इतने बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनल योग वशिष्ठ पढ़ने में जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं आ सकता। उसमें जो डेप्थ दी थी, जो भी कंसेप्ट से जिस तरह से क्लैरिफाई किया था, वो मुश्किल, मतलब वो कहीं और मिलना मुश्किल ही है।
तो उसको पूरी तरह से पढ़ा और फिर मुझे लगा कि यह ज्ञान तो सब लोगों के पास लेकर जाना चाहिए। तो वो पढ़ते पढ़ते जो ट्रांसफॉर्मेशंस आते गए इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, कि कैसे सोचना चाहिए, दुनिया की तरफ कैसे देखना चाहिए, लोगों को कैसे समझना चाहिए, ये सारी बातें एक 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 आती गई। और फिर पता नहीं इतने सालों तक धीरे 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 अंदर से भी बहुत बदलाव आता गया, काफी अच्छे फर्क लगने लगे। पर एक वैराग्य भी डेवलप हो गया कि ये जो कुछ कर रहा हूँ लाइफ में वो मेरे वर्थ नहीं है। मैं जो हूँ यतीन जोशी, तो उसने तो काफी कुछ और करना चाहिए। यहाँ पे जो हो रहा है वो इतना मीनिंगफुल नहीं है जॉब करना। तो तभी से जॉब छोड़ने की बात शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे एक ने भी घर में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, उल्टा सारी बातें इधर उधर से करके पता नहीं कितनी डांट पड़ी। तो एक उभरता हुआ तारा उस टाइम दब गया था, ऐसा कह सकते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ करना चाहते हैं और हमको कोई बाद में सीधा रिजेक्ट कर देता है आउटराइटली, ये और क्या ऐसे कुछ बात कर रहे हो करके। खैर वो सब चलता रहा, लेकिन जब ये पूरा योग वशिष्ठ पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं लोगों के जीवन में इसको लेकर जाऊं। उसको लेकर जाने के लिए फिर मैंने छोटी स्केल पे अलग अलग जगह पुणे में सेशंस लेना शुरू कर दिया और फिर उसके ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स बनने के बाद उनके हर मंथ एक फॉलोअप होता था, हम लोग इकट्ठा आते थे। तो काफी समय तक मैं यहाँ से कोथरूड से महीने में एक बार विश्रांतवाड़ी जाता था, वहां पे सेशन लेता था उनके फॉलोअप्स। एक बार 2 सेशन तो हो चुके थे, फिर उनका फॉलोअप लेना वहां पे था। तो सब लोग के साथ बैठ के हम चर्चा करते थे। कोथरूड में भी उसके फिर मंथली एक बार मीटिंग होने लगे। तो इन सेशंस में करीब ऐसे 25 सेशन हो गए। कभी नागपुर गया था तो वहां पे भी 2 सेशन मैंने लिए थे। तो ये सेशन करते वक्त लोगों के प्रश्न थे कि कौन सी किताब पढ़े। और जब मैंने उनको, उस समय मैं सच में निरुत्तर था कि अगर कोई किसी को बताओ तो कौन सी बुक बताओ, क्योंकि वेंकटेशानंद जी की बुक है वो नए आदमी को एकदम बाउंसर हो जाती है, उनको समझ में नहीं आती और काफी डिस्करेजिंग हो जाती है। और जो मैंने मराठी किताब पढ़ी थी वो मराठी इतनी इन्वॉल्व थी और इतनी बड़ी थी, और उसकी लैंग्वेज भी मतलब ऑलमोस्ट संस्कृत के इक्विवेलेंट थी, तो वो भी समझना किसी को मुश्किल हो जाता था। तो फिर एक दिन यहाँ पे पुणे में ही अप्पा बर्मन चौक है, वहां पे गया और जितने भी मुझे योग वशिष्ठ की किताबें मिली सारी की सारी खरीद ली। तो एक पागलपन पहले से ही था इसके पीछे लगने का। तो उस दिन कुछ 7-8 हजार रुपए की सारी किताबें मैं खरीद के घर पे लेके आया, उनकी पढ़ाई की कि कौन सी अच्छी है, क्या अच्छी है। और उसके बेसिस पे फिर मैंने कुछ रिकमेंडेशंस देना शुरू किए। तो उसमें सुमंत की किताब अच्छी थी, और फिर योगा योग से उनका नाम भी पता चला, घर का नंबर भी मिला, तो उनसे भी बात की। फिर वो जर्नी वहां से आगे बढ़ा। फिर उनके सेशंस हमने कुछ जगह ऑर्गेनाइज किए, उनको भी कई जगह बुलाया था। वो विश्रांतवाड़ी भी गई थी 2 बार और कोथरूड में भी 2 बार उन्होंने सेशंस लिए थे। तो वो केवल क्वेश्चन आंसर जैसे ही थे, पर इस तरह से बदलाव आते गए। और फिर सबसे बड़ी बात जो जीवन में बदली, वो भय चला गया। जीवन में मुसीबतें आई ये सब करते वक्त, पर जो कॉन्फिडेंस योग वशिष्ठ ने दिया ना, मैं आई कैन बेट कि वो किसी और ने नहीं दिया होगा। एक सिचुएशन इतनी टफ थी लाइफ में, वो करीब 3-4 साल तक चली, कि जिसमें घर में वाइफ का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया था। उस सिचुएशन में मेरे साथ जो भी उस सिचुएशन में फंसे थे, उनमें से एक को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें जीत सकता हूँ इस सिचुएशन में, और ये सिचुएशन मेरे ही फेवर में आएगी। बस केवल मन की शक्ति का उपयोग उस वक्त किया और वो सिचुएशन मेरे फेवर में टर्न होगी, बाकी किसी के फेवर में नहीं आ गई। एंड आई वाज द वीकेस्ट पॉन उस सिचुएशन में, कि जो सारी इसमें केवल जिसको कमजोर समझा जा सकता है तो वो मैं था बाय ऑल मीन्स। पर वो कॉन्फिडेंस जो वशिष्ठ का था कि आई विल विन। एंड आई यूज्ड टू टेल माय वाइफ एवरी टाइम कि तुम बस विश्वास रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ये किताब ने बोला ऐसा होता है तो ऐसा होता है, बिलीव इट एंड इट विल हैपन। और वो हो गया। आई मीन दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी कि ऐसी बातें हो सकती है। उसके बाद फिर जॉब छोड़ने के बारे में विषय आया, तो मैंने जैसे कहा था कि मुझे इस बात का कभी डर ही नहीं रहा, आज भी नहीं है, कि आगे जाके क्या होगा, ये मेरे फेवर में होगा कि नहीं होगा। वो कभी विकल्प मन में आते ही नहीं। योग वशिष्ठ ने वो कॉन्फिडेंस दिया है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, वो पा सकते हो। जो लीला सरस्वती के चैप्टर में हमने पढ़ा है या आगे भी पढ़ा है, जो प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा,
तो आई जस्ट टुक दैट स्टेप. एक बार मैंने घर में बोला कि अभी जॉब छोड़ना है, तो फिर से वही सिचुएशन कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. फॉर 1 ईयर मैंने पहले अभ्यास किया, उसके बाद मुझे और अभ्यास कंटिन्यू करना था. जॉब से ब्रेक लिया. इट वाज अनपेड लीव फॉर 2 years. एंड 2 साल के बाद कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे जॉब मेरी कंटिन्यू होगी करके. इट वाज लाइक इफ यू एग्री एंड आई एग्री देन वील मैरिज. हम शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे. ऐसी वो सिस्को की और मेरी बात थी, मेरी कंपनी पर भी. तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड था. तो 2 साल के ब्रेक में पहला साल माय वाइफ हैड रियली रियली टफ टाइम. क्योंकि पूरा 1 साल मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया था. यू वोंट बिलीव इट. 1 साल तक एक पैसा भी घर में नहीं आया, इनकम नथिंग. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई बिजनेस. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर वॉट एवर आई वाज सपोज्ड टू डू. एंड देन 1 साल के बाद जो शुरू हो गया, दैट कॉन्फिडेंस स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग. गुरुदेव की कृपा थी, ये नॉलेज था कि वो सारी बातें मेरे फेवर में टर्न हो गई और जैसे जैसे होना था वो आगे अभी चल रहा है. सो दैट इज गोइंग ऑन गुड. पर वो कॉन्फिडेंस जब कोई दे सकता है तो योग वासिष्ठ ग्रंथ ही दे सकता है, उसका अभ्यास ही दे सकता है. लाइफ इज ट्रूली अ सेलिब्रेशन. चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, गुरु प्रसाद है, ले लो एंड एंजॉय. दैट फीलिंग इज अनकंपेरेबल. यू कांट डिस्क्राइब इट. उसको क्या बताएं. दैट इज द बिगेस्ट चेंज आई हैव सीन. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल बी विथ मी फॉर लाइफ टाइम्स. जितना भी रहेगा उतना वो हमारे हमेशा साथ रहेगा. एंड सोमेश्वर एंड यू पीपल, आप लोग हैं इसलिए कुछ बोलने को मिलता है. ज्ञान रिवाइज तब होता है जब हम शेयर करने जाते हैं. योग वशिष्ठ के अंत में वही बोला है, यू शेयर इट. लोगों से बताओ, बात करो. तो मैं तो बदनाम हो गया एक तरह से कि कुछ कुछ लोग मीटिंग में बुलाते नहीं. बोलते यतिन को अगर मीटिंग में बुलाओगे तो केवल योग वशिष्ठ की बात करता है. घर वाले भी कभी कभी सटक जाते हैं कि क्या कुछ भी हो जाए तो योग वशिष्ठ शुरू करते हैं. तो एक तरह से ये क्रिटिसिज्म भी कॉम्प्लीमेंट होती है कि इतना पागलपन आना ये अच्छी बात है. दैट टेल्स दैट यू आर रियली कमिटेड टू योर गोल. ओके. आगे यही मैं अपने बच्चे को भी बताता हूँ, बाकी लोगों के भी जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको भी यही बताता हूँ कि पागल बनो उतने. इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ IIT, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ UPSC, जो मिलेगा उससे वही बातें करो. कि सामने वाले ने जब दुनिया में कहेंगे ना कि ये पागल हो चुका है, केवल एक ही बात करता है, that is a sign of your success. That is a sign of you are really onto it. That is a sign of योग, कि आप उसके साथ एक हो गए हो. वो साइन है. तो वो होना चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए. तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसा कोई कहता है कि नहीं नहीं ये केवल उसी की बातें करता है, पागल हो गया. गुड थिंग, चलो अच्छा है, आई एम वन विद दैट. उसके बाद जो होना है वो होगा. सो आई विल पास ऑन दिस मैसेज ऑन टीचर्स डे टू यू ऑल्सो. वॉट एवर यू डिसाइड, बी वन विद दैट. वो पूरा तन मन धन से हर सांस में वो विषय आना चाहिए. फिर कुछ उसका चेंज देखो, फिर उसका इफेक्ट देखो. देन नथिंग इज कंपेरेबल विद दैट. आज वहीं पे यही कहना चाहूंगा इसके ऊपर. दैट इज द चेंज आई हैव सीन. थैंक यू. जय गुरुदेव. आप लोग हैं इसलिए कुछ कर पाया, वरना मुश्किल था. That was really wonderful, Yatin. Thanks for sharing that journey of how Yoga Vaashishtha has came in your life, how it has transformed your life and our life also. So this is amazing. अपने साथ शलाका जी, वर्षा जी और काफी सारे लोग हैं. उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि उनकी जिंदगी में योग वाशिष्ठ कैसे आया, उनकी जिंदगी में योग वाशिष्ठ ने क्या बदलाव लाए. आजच्या शिक्षक दिनानिमित्त इंजींना आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि मला हे सांगायला आनंद वाटतो की योग वशिष्ठ हे माझ्या म्हणजे 12 वर्षापासून याचा थोडासा पाठपुरावा माझा सुरू होता. पहिल्यांदा आम्ही आरोग्य मंदिर मध्ये जेव्हा साधनेला वगैरे जायचो तेव्हा राजेश धोपेश्वरकरजी ते नॉलेज सेशन म्हणून हे करत होते. तेव्हापासून चालू होतं की ते करायचं पूर्ण. मग नंतर स्वामी वैशंपायनजींचं थोडंसं म्हणजे ऐकलं, पण दरवेळेस माझा खंडच पडत गेला. नंतर यतीनजींचं पण मी ऐकायला सुरुवात केलं आणि मला फार अप्रिसिएशन झालं की यतीनजी एवढे डीप गेले वगैरे, ह्याचा मला खूप आनंद झाला. आणि त्याच्यानंतर आता जे चालू आहे तुमच्या दोघांचंही, तर ते पूर्ण मी ऐकत असते. कुठेतरी आता असं वाटतं की ह्यावेळेस नक्कीच खंड पडणे आणि पूर्ण होईल.
जवळजवळ मी 10-12 तास नॉलेज सेशन मध्ये असते सध्या घरी असल्यामुळे. आणि विपरीत परिस्थितीत आनंदी राहायला योग वशिष्ठ शिकवलं हे तर आहेच आहे. दुसरं म्हणजे सुमनताईंच्या पुस्तकामध्ये पण जरा झालं की पुन्हा पुन्हा म्हणजे ही गोष्ट तेच सेशन पुन्हा पुन्हा किंवा पुन्हा पुन्हा वाचलं तरच डोक्यात शिरतं असं नक्कीच होतं. आणि आणखी सांगा म्हणजे काही ना काही ते खूप प्रत्येक आपल्या कुठल्या जन्मी त्यात माहिती आहे. पण माझ्या आध्यात्मिक प्रगतीत यतीजी आणि धनंजय भैयांचा खूप हातभार आहे. तसंच मला आणखीन सांगावंसं वाटतं की मला इतकं विशेष वाटलं की सुमनताईंनी त्यांच्या पुस्तकात आभार प्रदर्शनाची नावं दिली आहेत. तर त्याच्यात एम गोसावी म्हणून जे आहे नाश्ते तर 87 ते 90 या 3 वर्षात त्याने त्या स्टुडंट थीसिस करायचे आणि नागपूरनं ते काम यायचं. त्यांना पाहिलं नव्हतं कुरिअरने ते यायचं. SNDT कॉलेजमध्ये मी तेव्हा जॉब करत आहे. तिथे यायचं आणि आम्ही 3-4 जण मिळून काम करत होतो. तिथून म्हणजे काय खरंच योगायोग असेल ना की मला म्हणजे खरंच विश वाटतं. आणि हे काय योग आर्ट ऑफ लिव्हिंग मुळे आल्यामुळे आला, नाहीतर माझ्या आयुष्यात अशी प्रगती होणं हे मी कधीच अपेक्षित केलं नव्हतं. आणि एका शब्दात सांगायचं झालं विपरीत परिस्थितीत आनंदी राहणं हे योग वशिष्ठांनी शिकवलं आणि पूर्ण मी जगती आहे सध्या. थँक्यू. खूप सुंदर वर्णन वर्षाताईंनी इथे केलेलं आहे. त्यांच्या जीवनात योग वशिष्ठ कसं आलं आणि त्यांच्या जीवनामध्ये योग वशिष्ठांनी काय आमूलाग्र बदल घडवून आणला ते त्यांनी आता आपल्यासोबत शेअर केलं. थँक्यू सो मच वर्षाताई. वी ऑल्सो हॅव शलाकाजी विथ अस. शलाकाजी. जय गुरुदेव. यतीनजी, सोमेश्वर जी, हैप्पी टीचर्स डे. आप दोनों को मेरा भी वर्षाताईंसारखंच माझं पण झालं. मी सुरुवातीला एका झूम कॉलला जॉईन झाले. मला वाटतं मी सुदर्शन क्रिया केली, त्या ग्रुपमध्ये मला योग वशिष्ठची लिंक आली आणि मी रोज जॉईन करायचे, पण माझ्या डोक्यात काहीच जात नव्हतं की हे काय चाललंय काय नाही. पण मी यतीनजींचे पण सकाळी सेशन्स अटेंड केले आणि त्यांनी पुस्तकाबद्दल सांगितलं आणि मग मी त्यांच्या घरी जाऊन पुस्तक आणलं. पण मला आता सांगितलं त्यांनी पण की तसं मला सुरुवातीला खूप बोर वाटलं ते पुस्तक, फ्रँकली स्पीकिंग. मला काहीच कळलं नाही. मग मी त्यांना एकदा झूम कॉलवर प्रश्न विचारला की कहाँ से शुरू करें ये बुक पढ़ने के लिए. तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट पेज से लास्ट तक आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ो. तेव्हापासून मला ते इतकं आवडलं पुस्तक की तुम्ही माझी सिच्युएशन समजू शकता की घरात माझ्या सून आहे आणि सासू आहे, पण मी खूप एन्जॉय करते आयुष्य. हे माझं खूप मोठं योग वशिष्ठांनी मला टीचर्स डेला मी त्यांना इतकं ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करून मला आता बोलता येत नाहीये की मला हे केवळ योग वशिष्ठमुळं शक्य झालंय. आणि मी पूर्वी खूप माझा मुलगा असा वागला किंवा घरात म्हणजे की सासू असं बोलली, सून अशी, मी कशातच लक्ष देत नाही. मला यतीनजींचा तो एकच शब्द लक्षात आहे की अलंकार कुठला का असेना त्याच्यातलं सोनं असतं ते एकच असतं. त्यामुळे मी प्रत्येक माणसात देव बघायला लागले, प्रत्येक माणसाबद्दल मला प्रेम वाटायला लागलं आणि मी सहज फॉरगिव्ह करू शकले योग वशिष्ठमुळे. मी काहीच मनात घेत नाही किंवा कुणाचाही राग आला तरी मी म्हणजे सतत त्या योग वशिष्ठच्या नॉलेजमध्येच असते. मी फिजिकली जरी मी आसपास असेल, सगळी कर्तव्य करत असेल, तरी पण मला हे नॉलेज अजून मिळावं असं वाटतं. तर योग वशिष्ठ माझ्या आयुष्यात आणल्याबद्दल यतीनजी, सोमेश्वरजी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. जय गुरुदेव. जय would गुरुदेव. like to add first, Shalakaji used to say, I run around in my house with my, when it is the time for Yog Vashisht, so she runs around to find a corner to be somewhere with the Yog Vashisht, right? Are you right? Yes, Am I right? yes. Yeah. मैं I घर में really remember बार बार that. बोलती हूँ कि योग वशिष्ठ में ऐसा कहा है, ये जो वायरस के बारे में भी मैं बोलती हूँ कि ये सब लिखा है. कुछ भी पॉइंट मेरा योग वशिष्ठ के ऊपर ही आ जाते हैं तो पागल बोलते हैं मुझे, यतीनजी जैसा ऐसा कर. Thank you. Thanks for sharing your beautiful experience. Just to add to that,
even the confidence level, if we talk about today, I'm very glad to share that Shalakaji have initiated the summary presentation of Bhagavad Gita. And today was her first day. This was the first day. And we felt that it wasn't her first day at all, actually. She was so confident. She has explained that summary of Arjuna Vishad Yoga so well. Really glad to hear that, Shalakari. That was really wonderful. Thank you so much. Gurudev ne kiya mere bhi. So we also have Rebaji with us and Jiniji. Rebaji, would you like to share your experience, how Yog Vaashishtha came into your life? What was the changes that it has brought? How it was before and how it is now? Kindly explain. I am very grateful to you and Jatin Bhaiya because before to enter in this group, I don't know Yog Vaashishtha. And for your information, I daily attend this Yog Vaashishtha, and very much I think I am very much knowledgeable than previous, because many things are clear to me. That is Maya, what is Maya, and how we do in daily life, and detachment of the and emotional control of emotion, and it is day-to-day life is very I think I spend my daily life in very getting knowledge of Yog Vaashishtha. I try to cover my life. Actual language problem, and I very much grateful. And you can express it in Bengali also if you are comfortable. We don't mind. Bengali. Okay. Yeah. Go ahead. আমি ভীষণ খুশি এই মানে গ্রুপে ঢুকে, বিশেষত মানে সোমেশ্বর ভাইয়া আমার জন্য মানে কি বলবো একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছেন আর কি সোমেশ্বর ভাইয়া। আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ সোমেশ্বর ভাইয়ার কাছে। আর যতীন ভাইয়ার এত সুন্দর নলেজ, যে সেই নলেজ গুলো কি বলবো, মানে একদম মানে প্রতিদিন কি করে জীবনটা চালাতে হবে, কি করতে হবে, কি করে অ্যাটাচমেন্ট থাকতে হবে, মানে নিজের ছেলে মেয়ে বা যে কোনো রিলেশনশিপ থেকে, মানে ডিউটি করতে হবে, কর্তব্য করতে হবে, কিন্তু তার মাঝেও কি করে মানে অ্যাটাচমেন্টটা কমানো যায়, সেইটা সবসময় একটা মাথায় কাজ করছে আর কি, যে অ্যাটাচমেন্ট থাকলেই মুশকিল আর কি ইন ফিউচার আর কি, মানে তো সেটা একটু মুশকিল আছে এখনো পর্যন্ত। অ্যাটাচমেন্ট তো ছেলে মেয়ের কাছ থেকে কাটানোটা খুব কষ্টকর, কিন্তু যাই হোক, মানে এখন অনেক মানুষের সঙ্গে রিলেশনশিপ যেটা, সেটা অনেক ইজি এখন। বাঙালি কেউ নেই মনে হয়। नहीं, खूब भालो रे बाजी। बहुत बढ़िया है। जो संकल्प यतीन जी, बंगाली में कोई किसी को ट्रेन करो। मैं थोड़ा बहुत बोलना समझ लेता हूँ, क्योंकि मैं झारखंड और कोलकाता जाते रहता हूँ। सोमेश्वर खड़गपुर से है, तो हमको थोड़ा टच तो है। बांग्ला एकदम ही वो बोला ना सोमेश्वर, खूब भालो। वो भाषा भी बड़ी, ऐसा लगता है दोनों तरफ रसगुल्ले भर के बात कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। So, जो संकल्प लिया था ना ये मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज का, देखो मराठी में भी चल रहा है, मराठी पढ़ रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, बंगाली में बात कर रहे हैं, बात किया था। खुशी की लैंग्वेज एक ही है, उनकी खुशी देखो चेहरे के ऊपर। बिल्कुल खुशी की कोई लैंग्वेज नहीं होती। दैट इज सब। थैंक यू। Also I have Jiniji with us. Jiniji, would you like to? Yeah. Jai Gurudev, and happy Teachers Day to Someshwar ji, Yatin ji, Sangeeta ji, and Sachin ji. They have been like our teachers, let's say par excellence, because patiently they're answering all my questions.
Yeah, and actually to start with, my Yoga Vaashishtha journey happened like more than 15 years ago. That is the start. I had seen this book in the ashram bookstore, and I usually like to pick up some book to read. And then I opened a page and I read one paragraph and I didn't understand a word of it. So then I thought, okay, let me look at another page if I can understand that. Then I looked at another page and I still didn't understand anything. So I kept the book back on the shelf and came away. Again, the next time I went there, I looked. And it was the same situation. I wasn't able to understand anything. So that was like more than 15 years ago, maybe. And then later, I was looking out for different groups because I felt I should understand this book. It was mentioned that it was a very good book to, read, a very good scripture text. And only recently, when I came across the WhatsApp messages, I saw that first it was happening in Hindi. And my Hindi is a little limited. Like in school, I studied Hindi, but it was not, spoken. I can understand, but I can't reply. I tend to get mixed up with the tenses. So when I saw there was an English, session happening, I was like very happy. So at last I could buy the book. And so though it's just been a month of our journey, it has been very, what shall I say? It's made me think a lot. It's made me ponder. And sometimes I go back a few pages and read it again to understand it better. And I can say it is bringing more of a kind of centeredness in me compared to earlier. And now, since I've retired from work, having reached the age of superannuation, I have more time to devote to this. So I feel that, that there was a time for it to happen, and that is happening now. And I'm really grateful to all of you all for having done this, because Padma Sudha had told me that yours is the only group where you all have a question and answer session. Other groups, they just read a part of it and that's it. So there's, nobody to guide them. So I think this is one of the best groups, and it's a journey, and I'm very happy. I'm enjoying it. And I feel very good. Sometimes after the session, you feel as if that you've meditated a bit. So I can say that it's something wonderful that's happening. Thank you. Thank you all. Thanks for sharing your journey, Janizi, and the transformation Yoga Vaashishtha have brought into your life. We also have Anaga Tayi with us. Anaga ji, would you like to say a few words? How was your experience? आपके जीवन में योग वशिष्ठ कैसे आया और क्या परिवर्तन इसने लाया? मुझे नाम नहीं है, लेकिन एक लेडी योग वासिष्ठ पढ़ रही हूँ और वो बोल रहे हैं कि ये जब कुछ नहीं है। एक सुनने वाले श्रोता ने भी कहा हाँ वैसे ही है। इसके लिए मैं लाइब्रेरी में गई, पार्ले में अंधेरी में रहती हूँ, पार्ले टिळक मंदिर की लाइब्रेरी में गई और योग वासिष्ठ देखा तो वहां 13 खंड है और हर एक खंड 800-900 पन्नों का है। तो मैंने देखा कि ये तो डिग्री एग्जाम का मटेरियल हो गया। मैंने जो मिला वो पहला खंड लाया, लेकिन कुछ नहीं समझा। और अभी जब भी मोबाइल पे आपकी लिंक आई और योग वासिष्ठ सिर्फ एक ही बुक में पढ़ सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी की बात लगी। और टीचर्स डे में पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, संगीता जी को, सोमेश्वर जी को, सचिन जी को, कुसुम ताई को, कि अच्छी तरह से सब लोग समझा रहे हैं और लगता है कि ये ज्ञान मुझे मिल सकता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो गई है। Thank you so much. धन्यवाद अनगा जी for expressing your gratitude. We also other people also here. Lata ji is there. Shwati ji is there. Suman Patil. आप में से किसी को अपने बारे में व्यक्त करना है तो आप कर सकते हैं।
ओके, सो आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समापन कर लेते हैं। स्वल्प विराम लेते हैं, रुक जाते हैं, ताकि पुनः एक बार हम कल मिले। जस्ट मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, योग वशिष्ठ है मतलब पढ़ने के बाद ना एक नॉर्मल पहले सीखने वाला स्विमर कैसे जस्ट एक स्ट्रोक से सीखता है, लेकिन अभी वो जब उसको एक्सपर्ट हो जाता है तो वो बैक स्ट्रोक, हाफ स्ट्रोक कैसे भी आराम से, कैसे जैसे चाहिए वैसे स्विम कर सकता है। तो वैसे ही अभी संसार में वो आदमी जैसे चाहे वैसे वो आराम से वो स्विम कर सकता है, ये योग वशिष्ठ पहन, ऐसा मुझे डूबने का लगता है। डर नहीं है। डूबने का डर नहीं गया। है। डूबने का डर नहीं है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बढ़िया, दैट्स वेरी नाइस, ग्रेट। सो कंटिन्यू रखेंगे यतीन। अरे 40वां सेशन है ये, इवनिंग का, दिस इज अ 40th सेशन। मॉर्निंग में वी आर गोइंग टू कंप्लीट 100 सेशंस and this is a 40th session going on in the evening. So this amazing journey is let it continue. इसी प्रार्थना के साथ हम लोग अपनी वाणी को यहाँ पे रोक देंगे, ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।